गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उन्होंने फुल और अनकंडीशनल पार्डन दिया है अपने बेटे को, हंटर बाइडन को, टैक्स इवेजन के और ड्रग यूज़ के केस में। ठीक है, कहा जा रहा है कि बाइडन जो है वो और भी पार्डन्स देने वाले हैं। कमला हैरिस को, फिर जो एंथनी फाउची थे उनको देने वाले हैं, एक रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन है लीज शेनी, उनको भी देने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये यूएस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन जो है यूएस के प्रेसिडेंट को वो दिया गया है, लेकिन सिर्फ किस केसेस में? फेडरल क्राइम्स में। ठीक है, कोई भी इस पर लिमिट नहीं होती है, और कांग्रेस जो है वहाँ की पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, वो उस पर कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। प्रेसिडेंट को कोई आंसर भी नहीं देना होता कि वो क्यों पार्डन कर रहे हैं, कोई रीज़न भी नहीं बताने की ज़रूरत होती। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो फेडरल ऑफेंसेस के लिए पार्डन दे सकते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट का अगर ऑफेंस चल रहा है, मतलब किसी प्रेसिडेंट के ऊपर, तो वो उसको पार्डन नहीं कर सकते। पार्डन जो है वो सिर्फ पनिशमेंट को नलीफाई करता है, लेकिन कन्विक्शन को ओवरटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री देखें, 1787 में अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो है उन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर जो है वो प्रपोज की थी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में। तो अभी अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो ऑफिस ऑफ पार्डन अटॉर्नी होता है, वो प्रोसेस करता है ये पार्डन पिटिशंस, और ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट के पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि क्या वो उसको पार्डन करना चाहते हैं कि नहीं। प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल क्राइम्स को किसी भी समय पर जो है वो पार्डन कर सकते हैं, और इम्पीचमेंट केसेस पर ये पार्डनिंग जो पावर है ये एक्सटेंड नहीं होती है, याद रखना। पार्डन जो है किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है, चाहे लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू भी ना हुई हो उस पर्टिकुलर केस पे, और आफ्टर कन्विक्शन भी दिया जा सकता है, आफ्टर जजमेंट भी दिया जा सकता है, और ड्यूरिंग द केस भी दिया जा सकता है। इससे कन्विक्शन तो रिमूव नहीं होती है, और पार्डन का मतलब ये भी नहीं कि वो पर्सन इनोसेंट है। ठीक है, बस माफ़ किया गया है समझ लो प्रेसिडेंट द्वारा उसको। प्रेसिडेंट जो है वो प्रीएम्प्टिवली पार्डन भी कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिवली पार्डन जो है वो फ्यूचर क्रिमिनल एक्ट्स के तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रीएम्प्टिवली जो है, अगर कोई क्राइम ऑलरेडी कमिट कर दिया है किसी पर्सन ने, तो अगर चार्जेस फाइल नहीं हुए हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट पहले से ही पार्डन दे सकते हैं उसे। ठीक है, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रिमिशन की पावर्स हैं, और ये पावर्स कोर्ट मार्शल पर जो सेंटेंसेस मिलिट्री कोर्ट द्वारा सुनाए जाते हैं उन पर भी एक्सटेंड होती है। पनिशमेंट जो ऑफेंसेस अगर यूनियन की जिस पे अथॉरिटी है उन ऑफेंसेस पर भी जो है ये पार्डनिंग पावर लगती है, और अगर डेथ पेनल्टी है तो उसमें भी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे, अपने आप पार्डन नहीं करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर उनको वो बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जुडिशियल रिव्यू भी इस पर किया जा सकता है, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में होगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्नेक बाइट्स। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अर्ज किया है कि स्नेक बाइट्स को एक नोटिफाइबल डिसीज़ जो है वो क्लासीफाई किया जाए, ताकि जो है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स वो उन केसेस को रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, स्नेक बाइट जो है एक सिग्निफिकेंट पब्लिक चैलेंज पोज करते हैं, जिसमें कि 3 to 4 मिलियन केसेस हमें देखने को मिलते हैं हर साल, और लगभग 58,000 डेथ्स हमें हर साल इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो इसी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनोमिंग निकाला था, ताकि स्नेक बाइट डेथ्स को हाफ किया जा सके बाय 2030। तो 4 मेजर इंडिया में स्नेक्स हैं, जो कि जो ये स्नेक बाइट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कमर्शियल जो पॉलीवेलेंट एंटीवेनम हमारे लिए पास अवेलेबल है, वो इन 4 स्पीशीज़ के स्नेक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और लगभग 80% स्नेक बाइट्स को कवर भी कर लेता है। तो स्नेक बाइट्स की वजह से एक्यूट मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, जिससे कि इमीडिएट केयर की ज़रूरत पड़े। इससे सिवियर पैरालिसिस हो सकता है, और उसको ट्रीट भी किया जा सकता है एंटीवेनम का यूज़ करते हुए। तो स्नेक बाइट्स को नोटिफाइबल डिसीज़ अगर हम क्लासीफाई कर देंगे, तो उससे सर्वेलेंस इंप्रूव होगी, प्रिसाइज डेटा आएगा केसेस और डेथ्स के ऊपर। ठीक है, फिर हमें जो है पता लगेगा जब कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा केसेस आते हैं, उसके हिसाब से हम एंटी वेनम्स को एलोकेट कर सकेंगे उस एरिया में, और हेल्थ केयर वर्कर्स को हाई रिस्क एरियाज़ में ट्रेन कर सकेंगे। तो चैलेंजेस क्या रहते हैं? विक्टिम्स जो हैं वो कई बार हेल्थ केयर सेंटर्स पर पहुंचते ही नहीं टाइम पर, या फिर वो फेथ बेस्ड हीलर्स पर चले जाते हैं। ठीक है, और कई बार जो है
हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेनिंग नहीं होती है कि कैसे ट्रीट करें वो स्नेक बाइट्स के केसेस को। कई बार टेस्ट भी अनअवेलेबल रहते हैं कि कैसे कंफर्म किया जाए कि स्नेक बाइट हुई भी है या नहीं। तो ऑलमोस्ट जितना भी वेनम हमारी कंट्री में अभी तक डेवलप होता है वो सब जो है इरुला ट्राइब जो है तमिलनाडु और जो कर्नाटका और केरला के एरिया में रहती हैं वो ही बनाती हैं। ठीक है, तो एक मेजर चैलेंज ये रहता है कि बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो कई बार अलग अलग जोग्राफी में डिफरेंट होते हैं। मतलब कि जो एंटीवेनम बनाया जा रहा है, जिस स्नेक स्पीशीज़ का वो बनाया गया है वो एक स्टेट में डिफरेंट हो सकता है, दूसरे स्टेट में वो डिफरेंट हो सकता है, तो वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब कई बार ये भी देखा गया है कि जो जैसे नियोनेटल कोई स्नेक है उसकी जो वेनम है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है एज़ कम्पेयर टू उसी स्पीशीज़ का जो एडल्ट का अगर जो है स्नेक का जो बाइट होगा वो थोड़ा कम मतलब जो है डेडली होगा। एंटी वेनम्स जो है वो खुद भी कई बार कई तरह के रिएक्शंस कर देते हैं, और कई बार ऐसी कुछ लोकल स्नेक स्पीशीज़ भी हैं जिनका कमर्शियली अवेलेबल एंटी वेनम जो है वो काम ही नहीं करता उनके ऊपर। ओके, तो इसकी वजह से जो है रिसर्चर्स जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके टॉक्सिन्स को, और आर्टिफिशियली डिज़ाइन पेप्टाइड्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि टॉक्सिन्स को फाइट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक एक्सटर्नल लोन लिया जाए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से, ताकि जो सेकंड फेज़ है ओडिशा पीबीटीजी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है क्या? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, इन्वेस्ट करती है रूरल पीपल में ताकि उन्हें एम्पावर किया जा सके, उनकी फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और इनकम को इम्प्रूव किया जा सके। ग्रांट्स और लो इंटरेस्ट लोन्स जो है वो कई प्रोजेक्ट्स में देती है। 1977 में बनाई गई थी ग्लोबल फूड क्राइसिस के रिस्पॉन्स में, और ये उन एरियाज़ में खासकर काम करती है जहाँ पर पॉवर्टी और हंगर बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये रिसर्च को सपोर्ट करती है, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल चेंज, प्रो पुअर टेक्नोलॉजीज़ को ग्रांट्स देते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? रोम, इटली, और ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप के भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। ये टॉपिक सोशल इश्यूज और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो एम्प्लॉयबिलिटी है अमंग ग्रेजुएट्स वो कहा जा रहा है कि 7% से राइज होगी, और ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 का ये डेटा है। तो ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 एक जो है रिपोर्ट है, प्रिपेयर की जाती है CII के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद वी बॉक्स एंड AICTE। ये डेटा जो है इसमें 6.5 लाख कैंडिडेट से लिया गया है जो जिन्होंने ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट में अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेट किया। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 55% जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं वो ग्लोबली एम्प्लॉयबल होंगे 2025 में। इनमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी है वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की देखने को मिल रही है। जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट फॉर मेन है वो राइज होगा, जबकि जो विमेन का है वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेसेस एंड सरचार्ज। टॉपिक गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अरविंदपना गाड़िया जो हैं वो जो कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट्स की ग्रीवेंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिलाई करती है सेसेस और सरचार्जेस पर, वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो सेस और सरचार्जेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है यूनियन लिस्ट के अंडर, आर्टिकल 271 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो सेस बेसिकली क्या होता है? एक टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो इसको टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि सरचार्ज भी होता है। लेकिन सेस और सरचार्ज में क्या फ़र्क होता है? सेस जिस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है सिर्फ उसी में ही उस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि सरचार्ज जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कृषि कल्याण सेस है, स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस, तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो इससे ही पैसा इकट्ठा होगा वो चाहता तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, लेकिन उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है स्टेट्स के साथ और अपने पास ही रखती है, और उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही जो है वो सिर्फ यूज़ करती है। जबकि सरचार्ज जो होता है वो इनकम टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, इनकम टैक्स जो पे करते हो आप, और उस पैसे को जो है वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कलेक्शन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एज एक्सटेंड। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो हैं IIIT दिल्ली के, उन्होंने एज एक्सटेंड नाम का एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाया है जो उन मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करेगा जिससे कि एजिंग और जो है वो स्लो हो सकती है और हेल्थियर लाइव्स हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बायो एक्टिविटी डेटा
को यूटिलाइज कर रहा है एग्जिस्टिंग जीरो प्रोटेक्टर्स सब्सटेंसेस से, जो कि स्लो कर सकते हैं एजिंग को और प्रिडिक्ट करते हैं न्यू मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। रिसर्चर्स ने एज एक्सटेंड की एबिलिटी टू एनालाइज नेचुरल कंपाउंड्स भी जो है वो एक्सप्लोर की है ह्यूमन माइक्रोबायोम में, और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सेल एजिंग को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के वेटरन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को वन ऑफ द 6 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है 2024 का। अब ये अवार्ड जो है 2005 में स्टैब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। यूएन का ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। हर साल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में काम कर रहे हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस हो या पोल्यूशन एंड वेस्ट हो, उनको इसमें ऑनर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रेडियो एक्टिव डायमंड बैटरी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के और यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के, उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है, जिसमें कि एक स्ट्रेंज फ्यूजन देखने को मिल रहा है रेडियो एक्टिव डीके, सिंथेटिक डायमंड्स और प्लाज्मा केमिस्ट्री का। इसको में जो है कार्बन 14 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। इसकी हाफ लाइफ 5700 होती है। तो ये जो है शॉर्ट रेंज रेडिएशन जो है वो एमिट करता है, जो कि किसी भी सॉलिड मटेरियल द्वारा क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। ये अ, हमारे को यूज़ आ सकता है हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसमें कि हम पेस मेकर्स, हेयरिंग एड्स, ऑक्यूलर डिवाइसेस को पावर कर सकते हैं। बैटरी का जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी जो है चलाया जा सकता है। तो ये हमारे को इसलिए स्पेस मिशंस में भी ये हम इसको यूज़ करने में हमें हेल्प मिल सकती है। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is pardoning power of the president. This topic is important for your polity and your international relations. So US President Joe Biden has issued a full and unconditional pardon to his son Hunter Biden, and he's also considering preemptive pardons for Vice President Kamala Harris, uh, Anthony Fauci, and Liz Cheney, among many others. So just imagine if this would have happened in India, that the President of India pardoned the son of a prime minister or son of the president, then how the Indian media or the world media would have reacted to it. Okay, but just because the U.S. President Joe Biden, he's the president of U.S., the Western media is having the Western media is quite about it, and they're not vociferously questioning the president over this particular very corrupt thing. So, anyways, what is the pardoning power of the US president? So, the president of US has the constitutional right to pardon for sentences related to federal crimes, and this pardoning power is granted without any limit, and it cannot be restricted by Congress. President is not answerable for his pardons, and he does not have to provide any reason for issuing this pardon. So the US Constitution grants the pardoning power to the president for federal offenses except in the case of impeachment. Impeachment happens in the case of president, so he, in case he is being impeached, he cannot pardon himself. So pardoning power, a pardon nullifies the punishment, but it does not overturn convictions. So what happened in 1787? Alexander Hamilton proposed this presidential pardoning power at the Constitutional Convention. So what happens now is that Department of Justice Office of Pardon Attorney processes pardon petitions, and this office makes non-binding recommendations to the president, and the president has the final authority over it. So president can pardon federal crimes at any time. Okay, but of course this pardoning power is limited to federal offenses only and not under state laws. He cannot pardon that. So pardon can be granted at any stage, even before the trial has started, okay, or legal proceedings have started, even during the proceedings, and even after conviction and judgment. Okay, so this does not remove the conviction, and pardon does not imply that the person is innocent. President cannot preemptively pardon future criminal acts, but president can pardon individuals for crimes that they have already committed, but for which the charges have not been filed or the sentences have not been imposed. Okay, so this is what he's doing. He is going to save. He's basically saving Kamala Harris from any investigation, or Anthony Fauci, who is the head of the gain of function research that led to the coronavirus that ravaged the world in the last few years. So he wants to protect him for reasons best known to the Democrats,
and that's why he's preemptively pardoning Anthony Fauci as well. Otherwise, why would a chief medical officer be pardoned among the um, just before the change of administration? Okay, so President of India, in with respect to pardoning power, if we want to compare it with the U.S. president, then President of India can grant pardons, reprieves, respites, and remissions, and the he can also suspend, remit, or commute sentences in the court martial cases and the offenses which are of union law, and even death sentences. But in the Maruram versus Union of India case, the Supreme Court ruled that the president must act on the advice of the central government. But remember, even judicial review can happen in case, but it happens in very rare cases. But if the pardon has been very irrelevant, irrational, discriminatory, or malified, then judicial review can happen. Okay, this is not possible in the U.S. Constitution, despite the fact that they claim themselves to be a superior democracy. Okay, so the next topic is snake bites. This topic is important for your social issues and governance section. So Union Health Ministry has urged states to classify snake bites as a notifiable disease, requiring both private and public hospitals to report cases. So, snakebite is a significant public health challenge in India with 3.4 million cases and estimated 58,000 deaths annually. So, to address this issue, government launched the National Action Plan for Prevention and Control of Snakebite and Venoming this year, so as to halve the snakebite deaths by 2030. So, the commercial polyvalent antivenom is effective against the four major species of snakes, or the bites that occur from these four major species of snake, which covers about 80% of the total snake bites. Snake bites can lead to acute medical emergencies and require immediate care, and they can cause severe paralysis. So they need to be treated with antivenom. So classifying the snake bites as notifiable would improve the surveillance, and it would provide precise data on cases and deaths. So we would be able to help allocate antivenoms and train healthcare workers in high risk areas. Okay. So what are the challenges of treating snake bites? Victims do not often reach the healthcare centers in time, and they start relying on faith based healers. Sometimes there is also healthcare staff who is not adequately trained to treat snake bites. Then there is no test to confirm snake bites. Okay, so almost all of the venom that we use as or that we develop as antivenom uh, is procured from the snakes that are caught by the Irula tribe. Okay, but there is a major challenge. The biochemical constituents and effect of the venom from the same snake species may differ based on geography. So, the same snake species from Tamil Nadu, if you develop antivenom for that, may not be applicable in, let's suppose, northern Indian state. Okay, and there is also venom potency that changes with snake's age. Some snakes, when they are neonatal, with then they are more toxic than if they get in adult age. Okay, so antivenoms themselves cause several reactions. Snake species or local snake species, if they bite a person, then the commercially available antivenom does not work on them. Okay, researchers therefore are developing artificially produced antibodies which can help neutralize these toxins, and artificially designed peptides are also being made to fight the toxin. Okay. So the next topic is International Fund for Agricultural Development. This topic is important for your economy section. So Odisha government is planning to secure a 734.86 crore external loan from the International Fund for Agricultural Development so as to implement the second phase of Odisha PVTG Empowerment and Livelihood Improvement Program. So this IFAD is an international financial institution which is specialized UN agency. It invests in rural people, empowering them to improve their food security, nutrition, and income through funding of grants and low interest loans to several projects. It was founded in 1977 in response to a global food crisis. It works in areas where poverty and hunger are most prominent. It grants support research, innovation, institutional change, and pro poor technologies. It is headquartered in Rome, and it is a member of the United Nations Development Group also. Okay. So the next topic is India Skills Report 2025. This topic is important for your social issues.
So India's employability among graduates is expected to rise by 7% as per the India Skills Report 2025, which is prepared by the industry body CII in collaboration with VBox and AICTE. So it is based on the data from 6.5 lakh candidates who participated in the global employability test across India. So what are the highlights of this report? Nearly 55% of the Indian graduates will be globally employable in 2025, and it also notes that management graduates will have the highest global employability. A gender analysis shows that employability rate for women is going to rise while that of the women will be declining. Okay. So the next topic is cesses and surcharge. This topic is important for governance and economy section. So Arvind Panagaria, who is the chairperson of 16th Finance Commission, has recently termed the grievance of states with respect to central government's increasing reliance on cesses and surcharge as a complicated issue. Cess and surcharges are levied by the central government for the purposes of the union under Article 275 of 271 of the Constitution. A cess is basically a tax on tax. Government levies it on the tax liability, and similar to that, surcharge is also levied on the tax liability. And the difference between cess and surcharge is that cess is used for a specific purpose, like we have this Krishi Kalyan cess, Swachh Bharat cess, education cess. But surcharge is charged on income taxes that are paid, and it is paid by taxpayers who fall in a particular tax bracket. And surcharge is not collected for any specific purpose. The amount collected from surcharge can be used for anything by the central government. The proceeds collected from these surcharges and cess is levied by the union from part of the Consolidated Fund of India, and this amount is not shared with the state governments. Okay, they are at the exclusive disposal of the union government only. So the next topic is age extent. This topic is important for your science and tech section. Researchers at IIT Delhi have developed age extent, which is an artificial intelligence powered platform to discover molecules that could slow down aging and promote healthier lives. So age extent utilizes bioactivity data from existing geroprotector substances that can slow aging to predict new molecules with similar properties. The research has also explored age extent's ability to analyze natural compounds found in the human microbiome, tiny organisms that live in our bodies, and their role in controlling cell aging. Okay. So the next topic is Champions of the Earth Award. This topic is important for your environment section. So Indian veteran ecologist Madhav Gadpil has been named as one of the 6 Champions of the Earth Award for 2024. So this award was established in 2005 by the UNEP. So it is the UN's highest environmental honor. And every year, UNEP honors individuals and organizations who are working on innovative and sustainable solutions to address the triple planetary crisis of climate change, nature and biodiversity loss, and pollution and waste. Okay, so these awards are given in 4 categories: policy leadership, inspiration and action, entrepreneurial vision, and science and innovation. So the next topic is radioactive diamond battery. This topic is again important for your science and tech section. So scientists from the University of Bristol and UK Atomic Energy Authority have created world's first carbon 14 diamond battery. It is a strange fusion of radioactive decay, synthetic diamonds, and plasma chemistry. It uses carbon 14, which is a radioisotope of carbon of half-life 5700, and it emits a short range radiation which can be quickly absorbed by any solid material. So it can be particularly helpful in the healthcare sector, where it can be used for powering pacemakers, hearing aids, and ocular devices. Battery can also be used in extreme environments, so that's why it can be of great help in space missions as well. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.